Hello, is my voice is audible to you? Yes, sir. Good morning to all. So ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਔਰ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ 20 ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 20 ਮਿੰਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਨਲੀ 20 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ ਜਸਟ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਜਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, so rigid body, a body is assembly of point masses such that the relative distances of separation between any two point masses remains constant under the application of force। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਬਲੋਕ ਆਫ ਵੁੱਡ ਔਰ ਮੈਟਲ, ਵੈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰਸ generally with our hands, we cannot change its shape or size. That means the book in our hand is not a rigid body, and the block of wood or metal is a example of a rigid body. So mathematically or in technical terms we define if F, that is force applied on the body, is not equal to 0, that means we have to apply some force, then the relative separation between the ith and jth particle of the rigid body remains constant। so separation ਜੋ particles ਦਾ rigid body ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ change ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ constant। so example, for example gas molecule in itself, molecule for example molecule of oxygen, molecule of carbon dioxide, molecule of water, in itself they are rigid body, and when we apply force ਤਾਂ ਜੋ oxygen ਦੇ molecule ਦੇ ਵਿੱਚ oxygen 'ਚ ਜੋ separation ਹੈ that cannot change। Similarly carbon dioxide, similarly water, rock these are the examples of rigid bodies। so when we discuss mechanics of rigid bodies, so that means we have to apply force at certain point and we convert the big body into small body, that is a point object। so we need this concept center of mass that you learned in +1। so center of mass, it describes the distribution of mass of the body। so definition is center of mass is defined as the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated। so because mass is a scalar quantity, so we define the term concentrated। so the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated। is it clear? मेरी आवाज़ तो तुहाडे कोले आ रही है? एक जना मैनूं बोल के दस्सिओ प्लीज़, थोड़ा पता नहीं लग रहा। मेरी आवाज़ आ रही है तुहाडे कोल? Yes, sir. ओके ठीक है। सो एग्जांपल्स है जिवें यूनीफॉर्म रॉड, जिथे ਉਹਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ, so the center of mass lies at the same point। similarly a circular ring, C for circular ring, and sphere geometric center ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟ ਲਗਾਇਆ, this dot represents the position of the center of mass। similarly a triangular lamina, so all the medians, the point where they cut, that is called centroid। so ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ center of mass ਹੈ। ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ diagonals ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, that point is the position of the center of mass। similarly there is a term center of gravity। so instead of scalar quantity, gravity ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ weight ਦਾ concept ਆਉਂਦਾ ਹੈ। mass ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ weight ਲਿਖਾਂਗੇ। weight is a vector quantity। then we do not say concentrated, we say the acting। so the center of gravity, straight line means the same definition। center of gravity is defined as the point where whole weight of the body is supposed to be acting। weight is the force, that is vector, so we define it as acting। so for small objects or bodies
where acceleration due to gravity is constant, then center of gravity is equivalent to center of mass. That means both are lying at the same point. So when we study the mechanics, we have to apply force and we study the motion of the object. So motion of the rigid body. So there are two types of motions. One is translational motion and second is rotational motion. So in this chapter and this book, we focus on the second part, that is rotational motion. So what's the translational motion? When we apply force and that there is a displacement of the body in the direction of the force, and all the objects, all the particles of the rigid body move with the body in, and when we plot their trajectories, all the lines are parallel to each other. So that means this such type of motion is known as translational motion. So in this, velocity is known as linear velocity. But in a rotational motion, when suppose we have a rock, this B-shaped rock, when we rotate this rock by tying it with the string in the horizontal circle with the help of a string, then this circular path covered by this rock about the string is called rotational motion. That means body is moving at the in fixed path around a given axis. And we know the terms axis and what is axis, how we define the axis of rotation, that we define in this concept. So rotational motion ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ velocity ਆਉਂਦੀ ਹੈ, that is omega, which is called angular velocity. That is the rate of change of angular displacement with respect to distance. So d theta by dt, that is angular velocity, or angular velocity is also termed as angular frequency. Or there is a relationship between the linear velocity and angular velocity. And what is the relation? That is v linear velocity is equal to omega angular velocity cross of r vector, where r vector is the position vector of the particle which is under concentration. So v is equal to omega cross r. That is well known relation that you learnt in +1, 10 + 1. So what is the axis of rotation? When all the many rigid bodies moving in a circular path, and all the particles of the rigid body moving with the rigid body, and they describe the trajectory in the form of circles. Similarly in this case, when translation motion and all the particles of the body moving with the body, the trajectory, that is the path covered by the particles of the rigid body, is called trajectory. The trajectories of all the particles is parallel lines. In this case, the trajectories of all the particles of the rigid body is a parallel circles. So first circle, second circle, third circle. When we join the center of these circles by an imaginary line, this imaginary line which is perpendicular to the plane of the circles and passing through their centers is called axis of rotation. And the distance of all the particles from this axis of rotation is r, this r vector, and omega is same for all the particles. Omega is angular velocity, but v is different because r is different. So v, as omega is constant for all the particles of the rigid body, and r is distance from the axis of rotation is different. This distance is small, this distance is large. In this case, the magnitude of this r vector is more than that of magnitude of r1 vector. So in this case, velocity of v2 vector is more than v1 vector. So v and r are different, but omega is same. So we use the concept of moment of inertia. That is, the moment of inertia plays the same role in rotational motion as mass plays in the linear motion, that is translational motion. Moment of inertia is defined as the mr square. Small moment of inertia of the body is di is equal to dm, that is small mass into r square. And if we want to calculate total moment of inertia of the rigid body about the axis of rotation, then we integrate it dm r square. So units of moment of inertia is always that is kilogram meter square or gram centimeter square. So you have to remember this unit mr square, kilogram meter square. ਇਹ ਅਸੀਂ next article 'ਚ use करने हैं kilogram meter square. Moment of inertia, that is well known quantity. So moment of inertia of a circular ring of mass m and radius r is mr square along the axis passing through its center perpendicular to its plane. ਇਹ ਜਿਹੜੇ quantities ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ moment of inertia ਦੀਆਂ, ਇਹ 10+1 ਦਾ ਹੀ concept ਹੈ, just to revise it, but they are not included in our syllabus. I repeat again. So moment of inertia ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ concept ਆ ਇੱਕ slide ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ये just to revise the concept, but it is not included in our syllabus directly. सो सिलेबस च एज इट इज़ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम च नहीं पूछा जाऊगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना है, डिस्क का कितना है, एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की है, दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करके मैं ये वाली स्लाइड स्किप ही कर लग्या है जस्ट टू रिवाइज द कंसैप्ट कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, तो किस पार्टिकल का कितना होंदा है. सो वी शिफ्ट टू द आर्टिकल विच इज़ डायरेक्टली इनक्लूडेड इन अवर सिलेबस. So angular momentum of rigid body and inertia tensor with 9 components. This is the article which is mentioned in the top line of the syllabus, and this is the sure article for examination point of view. So tensor, what is a tensor? Moment of inertia tensor, rigid body. Rigid body is the body whose shape and size will not change by the application of force, or in other words the distance between the two particles of the rigid body will not change, that is remains constant when we apply force on it. So angular momentum की है, that is moment of linear momentum. So this is the symbol of angular momentum, capital L. It is equal to I into omega, and linear momentum, that is mass into linear velocity. This is linear momentum, this is angular momentum. And what is the definition of angular momentum? It is movement of linear momentum. So first of all ये जिवें ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस करके आए कि angular रोटेशनल मोशन का सैकंड नाम है एंगूलर मोशन. एंगूलर मोशन भी कह देंगे, एंगूलर मोशन असी रोटेशनल मोशन भी कहने, बिकॉज इन दिस केस एंगल दैट इज़ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पार्टिकल ऑलवेज चेंज इट्स एंगल फ्रॉम 0 to 2 पाई, दैट इज़ 360 रोटेशन तो बाद फिर रिपीट होता है एंगूलर मोशन. सो ये जोड़े पार्टिकल्स है ये पैरल सर्कल्स बना रहे हैं, पैरल सर्कल के सेंटर में ज्वाइन करने वाली जी परपेंडिकुलर लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिमें असी फस्ट पेज के उपर इस तो लास्ट अभी डिस्कस करके आए हैं. सो एक टर्म आ रही है इनर्शिया टेंसर. व्हाट इज़ ए टेंसर? वी नो द टर्म्स स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एंड व्हाट इज़ ए टेंसर? सो टेंसर इज़ ए पैरामीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन vector and scalar quantities. So this is that parameter which joins or which combines scalar and vector quantities. Otherwise we know the two quantities are equal if they are of same nature. Otherwise and this parameter is a special, it can behave like a vector as well as a scalar. So this is called tensor. So tensor definition very clear hai, it is a parameter of geometrical object which describes the relationship between vector and scalar quantities. So the article starts from here. Consider a rigid body rotates about axis of rotation with omega. And what is omega? Omega is its angular velocity. So omega is angular velocity. Let it be made up of, means the rigid body. The rigid body is be made up of n particles. Suppose as rigid body n particles है and corresponding each particle mass mention करता है m1 m2 up to mn, and their position vectors from the axis of rotation are r1 vector, r2 vector, rn vector, क्योंकि ਅਸੀਂ n particle ਮੰਨੇ हैं, and there are their position vectors respectively from किथों, from the axis of rotation. Let v1 v2 vn be their linear velocities. So as we described in the last section, that is there is a relationship between v is equal to omega cross r. So omega constant है, अगर r different है तो velocities भी, linear velocities भी different होंगी. Now we focus our attention on the nth particle. So for nth particle, angular momentum. What is angular momentum? It is the movement of linear momentum. Movement means it's the cross product of the position vector with that quantity. So movement of linear momentum means r position vector of nth particle cross movement of linear momentum of the nth particle. So this small l is symbol of angular momentum. Angular momentum of the nth particle is equal to position vector of nth particle cross linear momentum. This is by definition. So what is p? P is linear momentum of the nth particle, and it is equal to mass into linear velocity of the nth particle. Put this value here, we get Rn, that is cross Mn Vn, or mass is a scalar quantity, we can write it in the outside. So Mn into bracket Rn cross Vn, position vector of nth particle into velocity of the nth particle. I think it is very clear. So angular momentum का expression थोड़ा modify कर लिया, Mn Rn cross Vn.
Therefore, total angular momentum capital L is equal to summation of all the particles ranging from 1 to n. जिन्ने भी उस rigid body च particle सी ਅਸੀਂ suppose करके आए थे कि n particle सी ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, that is summation mn, ਬਾਕੀ ਉਹੀ mn rn cross vn. I think it is clear. So we know the relationship between linear velocity and angular velocity, that is v is equal to omega cross r. For nth particle we write subscript n here. So v is equal to omega cross rn. Clear? और ओमेगा अगर सारे पार्टिकल्स रिजिड बॉडी दे ही है तो जिस एंगुलर वेलोसिटी नाल रिजिड बॉडी चल रही है, ऑल द पार्टिकल्स आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, वी रिप्लेस हियर सो ओमेगा एन विद ओमेगा ओनली. सो इस तो बाद असी ओमेगा एन नू ओमेगा नाल ही रिप्रजेंट करांगे नेक्स्ट फर्दर. सो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, दैट इज कैपिटल एल वेक्टर, इज द समेशन एम एन आर एन क्रॉस omega n into rn. We replace this omega n by omega in next jada page de upar. So this is equation number 2. I think it is very clear ke what is the angular momentum or what is this expression jada asi derive kita hai. It becomes main sada outcome ithe tak ho gaya hai. Now we have to expand this relation, that is equation number 2. In this equation there are 3 vectors in the bracket, rn cross omega n cross rn again. So we can expand this vector in this way. There is the identity in vector products, that is a cross b cross c. Then we can write this as b, we convert cross product into dot product, BAC minus CAB. You can remember this identity in this way, a cross b cross c is equal to BAC minus CAB. So this is identity that ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵੈਕਟਰ जो कैलकुलस है उत्थे तुसी ऑलरेडी पढ़ी हुई है. सो वी कंपेयर इट विद ए विद आर एन, बी विद ओमेगा एन एंड सी विद आर एन. सो वी राइट अगेन आर एन क्रॉस ओमेगा एन क्रॉस आर एन एंड राइट इन दिस वे बी ए सी माइनस सी ए बी. वैन वी ओपन दिस देर इज़ अ टर्म आर एन डॉट आर एन एंड देर इज़ अ टर्म आर एन डॉट ओमेगा एन. सो ओमेगा एन नूं असीं ओमेगा लिख लिया, इतों स्टार्ट कर लें, ओमेगा एन नूं ओमेगा लिख लिया, आर एन नूं आर एन ही रहन ता डॉट एंड ए टर्म आ गई. जी ए वाली टर्म सी ये 2 डॉट प्रोडक्ट सीगा आर एन डॉट आर एन, इट बिकम्स आर एन स्केयर. और ओमेगा एन नूं अगेन ओमेगा वैक्टर लिख लिया जिवें असीं उपर मैंशन करके आए सी, वी राइट ओमेगा एन बाय ओमेगा. सो जी इक्वेशन नंबर 2 सी वो मॉडिफाई होकर साडे कोल ये इक्वेशन की फॉर्म च आ गई. टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू समेशन एम एन ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा आर एन स्केयर माइनस आर एन डॉट ओमेगा. क्लियर? नाउ 2 स्पेशल केसेस. First case is when Rn, that is position vector, is perpendicular to omega vector. In that case ਜਿਹੜਾ dot product है दो perpendicular vectors ਦਾ always 0 ਹੁੰਦਾ. So first special case, if Rn vector is perpendicular to omega, in that case this term is 0. So this term vanishes. So this ਜਿਹੜੀ equation है, equation number 3 ਜਿਹੜੀ है वो simplify ਹੋਰ होगी. So omega L vector is equal to omega summation mn Rn square. एम आर स्केयर की चीज़ सी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, यूनिट की सी किलोग्राम मीटर स्केयर, एम आर स्केयर. सो ये टोटल जिन्ने भी पार्टिकल्स है सारे का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया तो उन्होंने प्रोडक्ट सम ले लिया सी, अलजेब्रिक सम. वी गेट दिस क्वांटिटी दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. सो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा वैक्टर आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. दिस इज़ द फर्स्ट स्पेशल केस इन विच ओमेगा and Rn are perpendicular to each other. So this is like simplest or special case. And what about second case? And second case in which this dot product is not equal to 0, they are not perpendicular to each other. So in that case what will happen? Let us see. When Rn dot omega is not equal to 0 means they are not perpendicular to each other. So we can write the value of Rn vector. Rn की चीज़ है position vector of nth particle of the rigid body. We can write its expression, that is coordinates अगर सानू पता हो nth particle दे x, y ते z, we can write its position vector x n i cap plus y n j cap plus z n k cap, where I cap, j cap, k cap are unit vector along the directions of x axis, y axis and z axis respectively. Okay, so similarly omega
that is angular velocity can be written in the three components omega xi cap plus omega yj cap plus omega zk cap. Okay, we can calculate this value because it is not equal to 0. now we have to calculate ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ हैं ਅਸੀਂ ਇਹ value calculate ਕਰਨ ਲੱਗੇ हैं rn dot omega and then rn dot omega ਇਹ value calculate ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ equation number 3 ਚ put ਕਰ ਦਾਂਗੇ and corresponding जो coefficients है i cap j cap k cap ਦੇ both sides ਤੇ compare ਕਰ ਲਾਂਗੇ then we get three components of L that is Lx Ly Lz corresponding ਜੋ values ਇੱਥੋਂ equation number 3 ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ values put ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ equate ਕਰਨ ਲਾਂਗੇ that means ਜਿਹੜਾ second special case ਹੈ first special case ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ discuss ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ second special case ਜੋ ਅਸੀਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਈ ਕੈਪ ਜੇ ਕੈਪ ਤੇ ਕੇ ਕੈਪ ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨੋ ਆਈ ਡਾਟ ਆਈ ਜੇ ਡਾਟ ਜੇ ਕੇ ਡਾਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਡਾਟ ਜੇ ਡਾਟ ਕੇ these values are 0 so that is very well clear to you rn dot omega कैलकुलेट कर लिया x n ओमेगा x ठीक है y n ओमेगा y z n ओमेगा z बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाती हैं so we get only 3 terms so when we calculate this rn dot omega ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਉੱਪਰ then rn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ rn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਕਲੀਅਰ ਸੀ x n i cap plus y n j cap plus z n k cap dot ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 3 terms ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ 3 terms ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ when we open this dot product we know dot product is distributive first value ने ये 3 नाल मल्टीप्लाई होना जाके 3 टर्म्स आ गई second value ने फिर 3 नाल मल्टीप्लाई होना जाके 1 2 3 6 टर्म्स हो गई थर्ड वैल्यू ने फिर 3 नाल मल्टीप्लाई होना जाके तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई 9 so we get 9 components in this case so when we put all these values here so ये 9 components है ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ L ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ L ਐਜ਼ Lx i cap Ly j cap Lz k cap ਸੋ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਗੈਟ that these components have different values and ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ Lx ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੋ Lx i cap Ly j cap plus Lz k cap ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਬਾਈ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ Lx ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਗੀ that is omega x i double x omega y i xy omega z i xz and similarly ਜਿਹੜੀ Ly ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਐਂਡ Lz ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ i double x ਵਾਟ ਇਜ਼ i xy ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੇਅਰ i double x ਇਜ਼ mn rn ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ xn ਸਕੁਅਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ i y ਜੋ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਆਈ ਵੀ ਹੈ diagonal ਦੇ cross i y that is mn rn ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ yn ਸਕੁਅਰ and izz mn rn ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ iz ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਸੋ mr ਸਕੁਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ x ਹੈ ਉੱਥੇ xn ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ y ਹੈ ਮਾਈਨਸ yn ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ z ਹੈ ਉੱਥੇ zn ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ rn ਚੋਂ nth ਪਾਰਟੀਕਲ ਚੋਂ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਅਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ixy ixz iyx ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਟਰਮਸ ਉੱਪਰ ਤੇ 3 ਟਰਮਸ ਨੀਚੇ ਹੈ 3 ਡਾਇਗਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਟੋਟਲ 9 ਟਰਮਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ixy iyx ਆਲ ਥੀਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ xy ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ xy ਆਊਗਾ ਐਂਡ mn xn yn so this is a moment of inertia of xy and this component is equal to mn xn into yn both the product ਜਿਹੜਾ ਹੈ यूनिट वही रहने चाहिए किलोग्राम मीटर स्केयर ये भी मीटर दैट इज दिस इज किलोग्राम सो ये भी किलोग्राम मीटर स्केयर से ऊपर ये भी किलोग्राम मीटर स्केयर सी बट दीज वैल्यू जड़ियाँ साढ़े को जिन्हों एक्स वाई है एक्स जैड है प्रोडक्ट वाली टर्म्स है वो वाली टर्म्स है जड़ियाँ ऑल आर नैगेटिव
जिथे जिहड़ी टर्म लिखी है क्योंकि साढ़े को एक्स वाई तो जैड है, इन्हों का कंबीनेशन है, एक्स एक्स इकट्ठे करते उपर, वाई 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 जैड जैड ये उपर इकट्ठे करते, बाकी जोड़ा कंबीनेशन बनते हैं परमुटेशन एंड कंबीनेशन वो 6 बन गए, एक्स वाई एक्स जैड वाई एक्स एक्स जोड़ा साढ़े को जैड एक्स जैड वाई ऑल एंड वी कंबाइन ऑल एंड इन्हों की वैल्यू असी लिखती ये 6 टर्म्स आ गई सी। सो वी कैन राइट ऑल दिस एक्सप्रैशन नंबर जी इक्वेशन नंबर 3 सी उन्होंने सिंपलीफाई वे इस तरह लिख सकते इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एल एक्स एल वाई एल जैड आई एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जैड एंड सो ऑन, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ आई एंड दिस इज ओमेगा। वी नो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा असी उत्ते डिस्कस किया इक्वेशन नंबर 4 च, बट इक्वेशन नंबर 4 उदों बनी सी जो फस्ट स्पैशल केस सी, जो सैकेंड स्पैशल केस है वो आई ओमेगा का जोड़ा सी आर एन तो ओमेगा एन का जोड़ा प्रोडक्ट सीगा वो 0 नहीं होया सी। इन दैट केस साढ़े को जो वैल्यू असी पुट की इक्वेट करने तो बाद इक्वेशन उस फॉर्म च ले आती बट इट मैट्रिक्स फॉर्म। सो दिस इज एल वैक्टर एल एक्स एल वाई एल जैड, दिस इज आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज ओमेगा। सो वी नो ओमेगा इज वैक्टर क्वांटिटी, एल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम इज वैक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? Moment of inertia is a tensor, so it relates the it has it is a scale appears a scalar quantity but it has components, 9 components. So component किसी vector ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, but whether it is a scalar quantity or not, so it is a tensor which relates two quantities vector and scalar to each other. So there are ਜਿਹੜਾ moment of inertia है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ मैट्रिक्स है, this is called moment of inertia tensor with the 9 कंपोनेंट्स। इन्होंने 9 कंपोनेंट्स के डिफरेंट नेम है। सो इतने एक फिगर बनाई है तुहानूं, ये डायगनल है, जो डायगनल वाले असीं कह दिंदे आ प्रिंसीपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया PMI, प्रिंसीपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 3 इस तो उपर है, 3 इस तो नीचे है, टोटल 9 कंपोनेंट्स है। ये उपर तो नीचे वाले है प्रोडक्ट वाले है, इन्होंने असीं कहने POI, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। सो इनर्शिया की ही सारी टर्म है, प्रिंसीपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। So what is product principal moment of inertia? That is IXX, IYY, IZZ ਜਿਹੜੇ ਇਹ diagonal ਚ ਹੈ, they are called principal moment of inertia and ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ around 3 ਉੱਪਰ ਤੇ 3 ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ POI, that is product of inertia। ਇਹ 6 components ਹੈ, 3 + 6 9। So this is the definition, this is important for short answer type question। What is the principal axis of inertia? A set of 3 mutually perpendicular axes having common origin fixed in the rigid body rotating such that POI, that is product of inertia, 6 terms are 0 about them, while PMI are non-zero, that are called principal axis of inertia। I repeat, a set of 3 mutually perpendicular axes having common origin fixed in the rigid body rotating such that the rigid body is rotating such that के product of inertia 6 terms ਜਿਹੜੀਆਂ they are 0 but ਜਿਹੜੇ diagonal है ਉਹ 0 ना होन, 0 about them, while PMI, that is principal moment of inertia, are non-zero, are called principal axis of inertia। So 3 terms आ गई, principal axis of inertia, product of inertia, principal moment of inertia। So ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ short answer type question ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। this is very important concept। so special case ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? inertia tensor is symmetric अगर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया IJ इज इक्वल टू JI होवे, दैट इज़ अगर XY तो YX के जोड़े वैल्यूज़ है वो इक्वल होने एक दूजे के तो असीं कह दें यह सिमेट्रिक है। एंड इनर्शिया टेंसर इज स्फेरिकल टॉप कदों कहने हैं वैन जोड़े ऑल द प्रिंसीपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया है, दैट इज़ IXX, IYY, IZZ, दे आर इक्वल टू ईच अदर, वी सेड इट एज स्फेरिकल टॉप। रिजिड बॉडी इज टर्म्ड एज स्फेरिकल टॉप इन दैट केस। एंड जोड़ा दिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज असिमेट्रिक टॉप। असिमेट्रिक कदों जो कोई भी इक्वल ना हो, दिस इज सिमेट्रिक टॉप। अगर ए लिख दी अगर तो कोई भी इक्वल ना हो एक दूजे के, दैन इट इज़ कॉल्ड असिमेट्रिक टॉप। सो मैं तुहाडे नाल प्रॉमिस 20 मिनट्स का किया सी, 5-7 मिनट्स उपर चले गए। सो आप इन्हों इत्थे क्लोज करते हैं। सो इन्ना तुसीं इन्हूं रिवाइज़ कर लिओ। नोट्स तुहानूं मैं शेयर किए हुए है, ये जिहड़ी मैं तुहानूं वैबसाइट दसी सी उस वैबसाइट जाके जो ईवन समैसटर है इत्थे करके तुहानूं स्क्रीन विजिबल नहीं होनी। सो जिहड़ी तुहानूं वैबसाइट मैं दसी सी मैं लिंक शेयर कर दिंदा, वो उहदे ते नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिहड़े मैं तुहानूं टीच कर रहा है वाले।
ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਕੁਐਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? यस सर नहीं है। नहीं है, समझ आ गया कुछ? यस सर। समझ आ आया? रही है। ठीक है बेटा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ हाँ ਲਓ। जी सर। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬਾਏ। So I am logging out. Okay.